बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक विद द न्यू टेस्ट। बेटा, जिस तरह आपको मालूम है हमारे साथ इंडिकेट इंग्लिश संडे टेस्ट 8 है और हमारे साथ टेस्ट में इंग्लिश पोर्शन की शुरुआत होती है, वो है क्वेश्चन नंबर 163 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यानी 163, विच कंडीशनल एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सवाल ये है कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस ऐसा है जो हमारे साथ यूनिवर्सल ट्रूथ या जिसको हम यूनिवर्सल फैक्ट भी कहते हैं उसकी बात करता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है यानी ऑप्शन ए, इफ वाटर reaches 100 degree it boils। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारे पास है, इफ इट रेन्स we will stay home। ऑप्शन सी हमारे पास है, इफ आई वर रिच I would travel। ऑप्शन डी हमारे पास है, इफ he had apologized if he had apologized she would have forgiven him। she would have forgiven him। सवाल हमारे पास यह है कि विच कंडीशनल एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ, कि कौन सा कंडीशनल हमारे पास ऐसा है जो हमें यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में बात करता है। तो याद रखें, कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर हम बात कर ले नु बच्चे कंडीशनल सेंटेंसेस मुंग सरदी नॉर्मली मुंग सर चिकम दी हगा सलो टाइप्स थी। यो तमुंग वायो जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। याद साथई पदे सलोर वानो टाइप्स की मुंग सर यो टाइप बल हम सचागे तमु नेक्स्ट कंडीशनल हम वायु को देट्स अनदर डिस्कशन। पदे सलोर वानो टाइप्स की कत्ता सूब हो रही नुमुंग सरा जीरो कंडीशनल दा से दे चे हगा मुंग सरा जनरल हगा मुंग सरा यूनिवर्सल फैक्ट्स खबर हम कई, हगा मुंग सरा साइंटिफिक फैक्ट्स खबर हम कई, हगा मुंग सरा मैथमेटिकल चिकम फैक्ट्स सी दागे खबर हम कई। जीरो कंडीशनल मुंग से रवि सशे, जीरो कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है, यानी ये स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट होता है। यानी जीरो कंडीशनल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है कि पहला पार्ट भी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा पार्ट भी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी द जुमले बने है सब हम सर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी और द्वे है सब हम सर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी। कमुंग टोल ऑप्शंस तो गुरु नाउ लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस को देखे, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इट बॉइल्स। द्वयम तो गुरा, इफ इट रेन्स वी विल स्टे। मने मा सर दे सिंपल प्रेजेंट टेंस, द्वे मा सर से दे will plus base form मुंग लगो दा हम सर पर फर्स्ट कंडीशनल की मींस मुंग सर जीरो कंडीशनल देना। वेम तो गोरा, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल दा मुंग सर कम कंडीशनल है। ये तो हमारे पास ये होता है सेकंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट टेंस प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म लगाते हैं। थर्ड कंडीशनल की मुंग सर से पास्ट परफेक्ट टेंस मुंग सर मौजूदी द पास्ट परफेक्ट टेंस ना बाद मुंग वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगो नो हागा मुंग सर दा दे नो लिहाजा दामा सररागो फर्स्ट कंडीशनल दा सेकंड कंडीशनल एंड दिस इज द थर्ड कंडीशनल। बात कम ऑप्शन की चे दाम करेक्ट ऑप्शन न दे, दाम करेक्ट ऑप्शन न दे, दाम करेक्ट ऑप्शन न दे नो सही ऑप्शन मा सर कम यो दे उगोरा डुमने पार्ट हम मा सर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दे, दूसरा मा सर हम चकम दे। सेकंड ऑप्शन भी हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इट इज व्हाट इट्स अ फैक्ट। यानी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। यानी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, यानी क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 164, व्हिच सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। कम जुमला दा सिदा चाहा ग्रामेटिकली सही न द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सलोर ऑप्शंस मा सरदी
अवल बमुंग जुमले तो गुरु had I known the truth, option A, had I known the truth, I would have acted differently. I would have acted differently. Option B जमा सरदे were she here, were she here, she would support us. She would support us. Option C जमा सरदे should you need help, call me. Should you need help, call me. Option D जमा सर चिकम दे हगा दे had I know the truth, had I know the truth, I would have acted differently. उमक्का statement that means I would have acted differently. सवाल जमा सरदा दे चिपदे सलूर वन ऑप्शंस की कम यव जुमला मुंग सरदा सिदा चिहा ग्रामेटिकली सही नदा अवल खुता सु जुमले तो गोरी जुमला मुंग सर कम योदा गोरा ये जितने जुमले हमारे साथ मौजूद हैं तमाम जुमले हमारे साथ हैं इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड सेंटेंसेस चिमुंग वर्तवायु इन्वर्जन पर सेकंड ईयर के द नॉवल शुरू के दो ना आखिरी चैप्टर यानी मींस नॉवल इज द लास्ट चैप्टर दहागे ना चेकमुंग वर्ता सेकंड लास्ट यूनिट वे लेशु पहागे के एक्सरसाइज के मुंग सर यो टॉपिक स्टा चागे तमुंग वायु इन्वर्जन among types of sentence guru no according to the meaning sentence mung sara 5 types the according to the structure sentence mung sara bya 4 types the inverted sentences mung sara chekam dia kade according to the variety hawale sara the sentence mung sara bya salo types the yani loose sentence, periodic sentence, balanced sentence and inverted sentence tamung wo inversion yani da mung sara de inversion sentences dini inverted chungo had I known the truth I would have acted differently बिल्कुल सही दा inverted sentences with शेवल दो पेज नहीं inverted sentence मुंग हगे तवायु in which the main verb या auxiliary verb is used before the subject यानी main verb या auxiliary verb चमुंग को जुमला के इस्तेमाल हो हगा द subject नमक के इस्तेमाल को दगे तमुंग को inversion या inverted sentences उगुरा पदे के subject में सर आई दे दो गुरा मा सरा main verb रगले दे the subject नमक के दे क्यों गुरा subject ते main verb मुंग सर चिकम दे subject ते auxiliary da mung sar ya main verb da shu ha balo gora bya ma sar subject rustu ragale de main verb chikam de ya auxiliary chorta mung wele shu ya main verb urta wele shu da mung sar chikam de makh ki ragale dinu pa har yo jumle ki category pa salor wan options ki mung sara subject the verbs na baat ki lagi deri dinu inverted sentence age tawai che pa age ki ba subject the main verb ya auxiliary na rustu lagi kha had I known the truth I would have acted differently बिल्कुल सही था were she here she would support us बिल्कुल सही था should you need help call me ठीक था यानी जुमले तो गोरा for example कमुंग द जुमलो एनालिसिस को द सलोर वाणो नो दामुंग सर का कंडीशनल ता चेंज को नो दामा सर थर्ड कंडीशनल दे दामा सर चिकम दे सेकंड कंडीशनल दे कदे तमुंग गुरु या दे तमुंग गुरु नुप कंडीशनल के चिकल मुंग सरा third conditional sentences चिकम मुंग सर दी third conditional मुंग सर मौजूद भी पहाड़ी के मुंग सको past perfect tense द हगे न बाद मुंग लगो would have plus third form past perfect के जाहिर खबर दा कहागा तो हर टेंस के खबर के हर या टाइप सेंटेंस खबर के और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की भी नो पहागी के मुंग हेड सर थर्ड फॉर्म लगो पदे क्यों गुरा हेड प्लस थर्ड फॉर्म श्तरे पदे के मुंग कदे तो गुरु हेड आई नो लगा हुआ है मुंग सरा थर्ड फॉर्म न दे नु द सवाल मुंग सर दादे चेकम आयवा जुमला दास दे चागा ग्रामेटिकली करेक्ट न दा नु मुंग सर सही ऑप्शन से शेदे ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें हमारे साथ आना चाहिए कि हेड आई नाउन के चली थर्ड फॉर्म रा गुना दो जुमला भी आया ओशवा लिहाजा दाम सही दा ऑप्शन सी हम सही दे इनकरेक्ट चेकम जुमला मुंग सर दा हागा मुंग सर दे ऑप्शन नंबर डी मुंग सर दे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जमा सर दे यानी क्वेश्चन नंबर 165
what will be the correct inverted sentence? सही inverted sentence په پدې کې ما سره کوم یو وی جمله دا ما سره if he were honest he would admit his mistake. کچری هغه ایماندار وي نو هغه بخپل غلطي چې کوم دی تسلیم کړي وا منلی به وو. سلور options یعنی دا ما سره question دا دی ها if he were honest he would admit his mistake. د دې جملې نه به مونږ جوړو inverted sentence یعنی inversion. سلور options دی ما سره. option number A ما سره موجود دی چې هغه دا دی were he honest he would admit his mistake. He would admit his mistake. Option B زما سره دی was he honest باقی عمدہ statement دی he would admit his mistake. option C زما سره دی خو صرف د ور په ځای واز راغو بل ما سره if he was honest باقی statement ما سره عمدہ کا یو statement دی یعنی باقی عمدہ پارٹ دی. option D زما سره موجود دی were he be honest باقی statement ما سره عمدہ دی یعنی he would admit his mistake. جمله ما سره دادا چې if he were honest زدا پورا جمله لیکم چې تاسو اندازو لګي if he were honest question دا دی ها یعنی the question statement مونږ سره دا دی he would admit his mistake. دا جمله دا د دې جملې بس صحیح انورټډ سنټنس مونږ سره کوم راځي یاد ساتئ په انورټډ سنټنسز کې مونږ سکو مونږ تینا اف چې کوم دي دغه کنډیشنل ورډز تینا ریموو جملې ته وګورئ were he honest he would admit his mistake was he honest if he was honest یا were he be honest نو کچری تاسو دی options تو وګورئ was he honest یاد ساتئ د کنډیشنل رولز مونږ سره دا دي the conditional sentences چې کوم rules دي مونږ سره normally کوم په simple past tense کې خبره کو نو مونږ د he she it he she it or singular subject سره مونږ was لګو د plural سره مونږ ور لګو یاد ساتئ په conditional کې rules دي کچری تا سره subject singularly یا plurally او خبره ته په past کې د هر یو سره با was ناراضي د بغلطي د هر subject سره چې ته لګي ته ور لګي ور clear د خبره نو دومبني option تو ګوري چونکه singular subject ہے چونکہ conditional نہ مونږ انورژن کو کنا نو ور خو صحیح دی ها was he honest مونږ وې چې was غلط راځي option B مونږ سره نشي کېدی if he was honest په انورژن کې مونږ conditional words ختمو دام نه دی were he be honest نو دام نشي کېدی دلته کې وګوري ورته لہذا ما سره صحیح option کم یو پاتې کېږي so option A ہمارے پاس ہے the correct option. question next ما سره دی 166 number question 166 सवाल दारे which sentence contains an elliptical conditional کوم جمله دا سیده ما سره چې په هغه کې مونږ سره elliptical conditional موجود دي option number A if necessary call me. option B زما سره موجود دی if you had called me I would have answered. option C زما سره موجود دی unless you study you will fail. unless you study you will fail. और आखिरी ऑप्शन दे option D if he studies he will succeed. if he studies he will succeed. د ټولو نه اهم پوینټ چې کوم مونږ سره دی کوېسچن کې مونږ تاسو کو د یو ورډ او هغه دی elliptical
इलिप्टिकल कंडीशनल. बच्चे अवल जान पदे यवा खबर पोए कई इलिप्टिकल कंडीशनल यानी मुंग सर वते दे द सशिना द इलिप्टिकल सेंटेंसेस ना याद साथी मख के डिस्कशन की मां खबरों का अकॉर्डिंग टू द मीनिंग द सेंटेंस टाइप्स मुंग सर दी 5 assertive या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस दा हो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर शो अकॉर्डिंग टू द according to the meaning show there are 5 types according to the structure mung sir the sentence these are types simple sentence compound sentence complex sentence and compound complex sentence da ho according to the structure show the dena mak ke mung your topic discuss ko according to the variety da students ta new kari ho chunke according to the variety mung sir salo types hum shtade che hage ke mung sir kam di balance sentence loose sentence periodic sentence बैलेंस सेंटेंस एंड इन्वर्टेड सेंटेंस चिपके मुंग द इन्वर्जन खबरों का याद साथे यो केस मुंग सर बल हुमश्ता चे हगे के मुंग सर यो टाइप ते चगे त मुंग वायु स्पेशल सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे खु स्पेशल सेंटेंस वर्ता वायु स्पेशल सेंटेंस के मुंग सर मेजर 2 टाइप्स थे यो त मुंग वायु माइनर सेंटेंसेस बल त मुंग वायु एलिप्टिकल सेंटेंसेस सतवई एलिप्टिकल सेंटेंस हगे तवई इन are those sentences in which some of the parts of speech in which some of the words are omitted as they are understood by the listener reader chapahari ke mung so words remove ko halan ke ha words mung sir understood we so the elliptical your example dele dar ko elliptical sentence da de for example want to eat ugora द जुमला ज़दा से निकलेशम यानी डू यू वांट टू ईट आया का पूरा फुल सेंटेंस मुंग लिखो द से निकले शुकने शु लिखले डू यू वांट टू ईट नो गोरा माते ना सब पार्ट्स ऑफ स्पीच या सब वर्ड्स रिमूव करना नो एलिप्टिकल सेंटेंस हगे तो वही चिपहारे के सब वर्ड्स मुंगा रिमूव को लेशु और कहागा तो रिमूव हम के नो दे आर ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय द लिसनर या रीडर सही दा नो एलिप्टिकल सेंटेंस वांट टू ईट मतलब दा दे डू यू वांट टू ईट क्लियर दा नो ओसगोरे कंडीशनल दे सवाल किसे भी मुंगसरा 166 क्वेश्चन दे व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन एलिप्टिकल कंडीशनल कम जुमला दे छहागे के मुंगसरा एलिप्टिकल कंडीशनल दे एलिप्टिकल कंडीशनल मींस छहागे के बस वर्ड्स रिमूव शिवी फॉर एग्जांपल इफ नेसेसरी कॉल मी Number 2, if you had called me, दा हम पूरा जाहिर खबर दा पूरा जुमला दा unless you study you will fail पूरा जुमला दा आखिरी ऑप्शन तो डी नंबर if he studies he will succeed दा हम पूरा जुमला दा if necessary दा जुमला मुं का पूरा जुमला लिखो दा से लिखले शू if it is necessary call me दा से लिखले शू yes no आया तासु कदी ऑप्शन नंबर ए तो गोरी if necessary call me पदे के मुंग सरा सही ऑप्शन दादे वले एलिप्टिकल सेंटेंस हगे तो वही चे सो वर्ड्स बापा के ओमिटेड वले चे दे आर अंडरस्टूड नीचे कंडीशनल जोड़म एलिप्टिकल कंडीशनल जोड़म हगे के बम सो वर्ड्स मा सरा ओमिटेड वी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जमा सर दे बच्चे क्वेश्चन नंबर 167 question 167 167 number question ki mung sarasa wai che which option is a type 3 conditional options dar talikam option A de zama sara if I see him I will tell him if I see him I will tell him option B if I saw him I would tell him if I saw him I would tell him option C जमा सर मौजूद है if I had seen him I would have told him have told him option D जमा सर मौजूद है if I had seen him
him, I would tell him. Now I would tell him now. जुमले तो गो रहे. Which question बने वाले जान पे which option is a type 3 conditional. बच्चे यो खबर तैयार दो साथ ही दा मुंग सर यो पॉइंट ते चे मुंगा यो टाइप ते चाहे तमुंग वायु conditional sentences याद साथ ही the conditional sentences तमुंग यो नुम्बल हो मखलू type sentences. Type sentences. In a type sentences means conditional. Test के गुरे in case conditional word need type हम दर दर कोले शी सही दा. So type sentences and conditional sentences they are the same thing. यो खबर दा सही दा. No गुरे. Question के सवी which option is a type 3 conditional? कम यो पके type 3 दे मतलब third conditional. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Zero के simple present tense plus simple present tense. First conditional के मुंग सको. Simple present tense plus will plus base form. Second conditional की मुंह से कहो. पर first की simple present tense plus will plus base form. पर second conditional की मुंह से कहो simple past tense plus would plus base form. पर third conditional की मुंह से कहो past perfect tense plus would have plus third form. उगो रिकम जे के past perfect tense थे. would have plus third form. कचरी option number C तमुंग उगुरु. Option C जमुंग सरा past perfect tense plus would have or third form. लिहाजा सही ऑप्शन मुंग सर से शेरी ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 168 जमुंग सर दे बचे. क्वेश्चन नंबर 168 अभी डोले के शांति लिंदिकी के खूब बचे हर ये ऑप्शन डिस्कस स्कूल पकड़ दी सही दा. क्वेश्चन 168 जमुंग सर दे which sentence is incorrect? खा ऑप्शन ए if I were rich, sorry, if I were you, I would apologize. I would apologize. Option 1. Option B, yani if he had left earlier, if he had left earlier, he would have caught the train. He would have caught the train. Option C जमा सर मौजूद दे. If she will come, if she will come, I will inform you. I will inform you. Option D जमा सर मौजूद दे. Should you require assistance, let me know. Should you require assistance, assistance मतलब दे help चमू वर्ता वेलेश. Let me know. Questions जमा सर दे चिपदी सलूर options की कम या जुमला दा सेदा चिहागा सशेदा which sentence is incorrect. गलत जुमला पकी कम या होता. If I were you, I would apologize. सही दा जुमला बिल्कुल टिक था. कम दे first second conditional देखना simple past tense plus would. बल दे if he had left earlier, he would have caught the train. Third conditional दे मासरा. If she will come, I will inform you. दा options the last के explain को. Next दे should you require assistance, let me know. यानी सही जुमला दा मासरा यानी inversion दे. याद साथ ही बचे चिकल हम तो conditional sentences discuss के कना. पर conditional sentences की चिकम तमुंग if clause वायु. यानी if clause. if clause हगे तो वही चिकम पार्ट के डूम बने if इस्तेमाल शो हगे तो if clause वही पर if clause की तो कल हम will इस्तेमाल निशिकोले. यानी मतलब दादे कचरी पर past की खबर है के नो would नशी इस्तेमाल होले क third conditional की खबर है के दे सेट तब गोरे. यानी मुंग पर if conditional की मुंग सको मुंग will पर if conditional के पयो सूरत हम नशो इस्तेमाल होले. will इस्तेमालीगी खूब सेकंड पार्ट पर if क्लास के ना नो लिहाजा चिकम ऑप्शन मुंग सरा गलत थे अगर दादे if she
comes da mung da se kole shu if she comes I will inform you sahi da chunke da option zama sara galat the question number 169 question number 169 zama sara de which conditional is logically impossible da lagada se خوندور غونته کې جمله ده زه options لیکم option number A دی if water freezes it expands option B زما سره دی if I had wings I would fly option C zama sara de if she had studied she would have passed option last yani D zama sara de if you heat ice it melts बच्चे the question के मात नद्दा तपुस कीगी چې دې کې کومه جمله دا سره چې هغه logically acceptable نه ده logically acceptable مطلب دا دی چې دا سیو جمله چې هغه human mind مړه د تاسو د سره منینا نو یاد ساتي د sentence definition چې کوم خلق کوي نو هغه دا سې کوي چې the group of words یا the combination of words which has a subject and a verb and always gives a complete meaning نو یاد ساتي د complete meaning سره یو word بل هم اډ کوي چې هغه ته وایي logical meaning چې complete meaning سره ما سره دا logical meaning هم راکړي یعنی means چې human mind هم accept کوي وګورئ if water freezes it expands یو خبره ده human mind accept کوي کنه yes if I had wings I would fly مینه دی لیکلې I would fly ها option C دے if she had studied she would have passed बिल्कुल का मेहनत करे हुए पास शवी बवा if you heat ice कचरी वो रत गर्म के it melts विली की बा नो दा बकाई ऑप्शंस खटुल मा सर दा सिदी च दा ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट कई देखि कम यो ऑप्शन दा सिदी च अगर दा सर ह्यूमन माइंड मनी ना दा इंसान के दा क्वालिटी दा सर रतले निश दा गबा वजरी नो पदे के ऑप्शन बी जमा सर दा सिदे च दिस इज लॉजिकली इनकरेक्ट यानी एक्सेप्टेबल ना Question number next Zama sir de 170 which sentence is correct question 170 one of my friends are a doctor option A one of my friends are a doctor option B Zama sir de one of my friends is a doctor one of my friends is a doctor option C zama sara de one of my friends were a doctor one of my friends were a doctor or option D zama sara de one of my friend is a doctor one of my friend is a doctor बच्चे पदी रूल जान पुई कई पदी केस जान पुई कई खबर द सकीगी खबर द फ्रेंड्स न कीगी खबर द देवन कीगी सिंपल इज दैट په خبره ځان پوي کوي خبره د څه شي کیږي خبره د دیون کیږي لہذا مون سره سبجیکټ په دې جمله کې ون دی په دې جمله کې سبجیکټ زمون سره فرندز نه دی this is not a subject original subject زما سره ون دی subject verb agreement rules مطابق مونږ سوایو کچری زمون سره singular subject نو the verb must remain singular subject takes a singular verb بل خبره ده تکوم دا مونږ سره یو structure هم دی چې هغه ته مونږ وایو one of چې کله په جمله کې one of راځي one of نه بعد چې کوم noun ته استعمالي the noun must be plural خو چې کوم verb ور سره ته استعمالي the verb must be singular وګورئ سلور وانه جملو ته one of چې کله رالو noun چې استعمالوم noun په plural خو چې verb ور سره استعمالو اب singular جملې ته وګورئ one of my friends noun دی
प्लूरल दे खो वर्ब सिंगुलर वर्ब मा आर लगोले दे, लिहाजा ऑप्शन ए सही न दे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी तो गो रही नाउन ची लगोम प्लूरल बवी खो वर्ब सिंगुलर भी, नाउन प्लूरल दे मा सरा वर्ब मा सरा सिंगुलर दे। क्लियर दा बाकी ऑप्शंस हम क्लियर को दा पास्ट टेंस की खबर है कही वन ऑफ माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाउन प्लूरल दे चूंकि वर्ब मा सरा प्लूरल दे, लिहाजा ऑप्शन सी हम सही जुमला न था। ऑप्शन डी तो गो रही वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, द डेर स्टूडेंट्स पर माइंड के बदई च खबरा दिल तक के दवन कीगी न मुंग फ्रेंड लगाओ च वन रागो फ्रेंड बम सिंगुलर राजी वर्ब बम सिंगुलर राजी, दा बिल्कुल गलत ते मादा तरुल उखुलू च कल वन ऑफ राशी नाउन बवर पस लाजिमी प्लूरल लगे वर्ब बस सिंगुलर लगे, लिहाजा मा सरा पके नाउन प्लूरल न दे, नाउन बस प्लूरल लगो मा नाउन सिंगुलर लगो ले दे, लिहाजा ऑप्शन डी हम गलत थे। नो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दैट डिर टेक्निकल पॉइंट थे बच्चे बुरे थे तडीर ज्यादा ख्याल का हुई सही था। आखिरी क्वेश्चन जमा सर दे, क्वेश्चन नंबर 171। Which sentence is correct? सही जुमला कमायोला 171 दे तब हम गोरे खा यो टेक्निकल पॉइंट पर पक इंशाल्लाह डिस्कस को। द टीचर along with the students who are present, ऑप्शन ए दे दा, ऑप्शन बी जमा सर दे द टीचर along with the students was present, ऑप्शन सी जमा सर दे the teacher along with the students have been present, आखिरी ऑप्शन दे ऑप्शन नंबर डी द टीचर along with the students are present। बच्चे पॉइंट जान कोई कही पर अंग्रेजे के सब फ्रेजेस जमुंग सरदा सीधी चे हगे तमुंग वायु along with, together with, as well as वगैरह वगैरह सब फ्रेजेस मुंग सरदा सीधी चे दा मुंग सर सिंगुलर दी और दा हमेशा सिंगुलर वर्ब्स अखली दे जुमले तो गोरी ऑप्शंस तो गोरी तासु तक क्वेश्चन के दा खबर कही चे व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट, सही जुमला पकी कमाई होदा द टीचर along with the students मुंग सरा मेन सब्जेक्ट पर ये जुमला के मेन सब्जेक्ट बची दा दे, मेन सब्जेक्ट दा दी हाँ मुंग सरा पर जुमला के मेन सब्जेक्ट्स दा न दी और मुंग वेल च फ्रेजेस यानी along with, together with, as well as दा फ्रेजेस मुंग सरा सिंगुलर दी नो च वर्ब लगो दा बस सिंगुलर वर्ब अखली गोरी वर्ता द टीचर along with the students वो प्लूरल वर्ब और सर कम हो दे प्लूरल वर्ब, लिहाजा ऑप्शन ए गलत। The teacher along with the students was मेन सब्जेक्ट से दे, मेन सब्जेक्ट हमारे साथ टीचर है नॉट द स्टूडेंट्स, along with the students मेन सब्जेक्ट निशिके दे मुंग सर मेन सब्जेक्ट दा दे नो जमुंग फोकस पपा मेन सब्जेक्ट बांधी हुई बची चे मेन सब्जेक्ट सिंगुलर ही वर्ब बजल लाजिमी सिंगुलर लगो पर पॉइंट जान कोई की मादा तो रुंबेना फ्रेजेस उलिकल पर दे खलक गलती की दे वेम तगूरी चे देना बात खुमा सरा प्लूरल नाउन जरा गली दी नो लिहाजा जब वर्ब प्लूरल लगोम पर यो सूरत के प्लूरल वर्ब नश लगोले वोले नश लगोले बिकॉज़ ऑफ द फ्रेजेस मा सरा से दी
singular दी, they are considered singular. The this verb हमेशा singular राजी. Next तो गोरे, the teacher along with the students have been ब्यामवर plural दे, लिहाजा दाम न दे, लिहाजा एम न दे. D number, the teacher along with the students are present, दाम plural verb दे. No उगोरी option B के मासरा दे, the teacher along with the students was verb मासरा कम और अगले दे, वर्ब मेरे साथ है सिंगुलर. तो जब ये फ्रेजेस हमारे साथ आ जाए तो उसमें हमारे साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब आएगा सिंगुलर. तो लिहाजा हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. द यो लेक्चर वीडियो लगे शांतिलिन तिश्वाख बचे डेर फ्रूटफुल और लुक्रेटिव पॉइंट्स पके डिस्कस हो टूल पॉइंट्स दगा दिमुंग सरा दा जमुंगा टेस्ट उदन पारा तरनन सहता पूरे. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के बगोर